Hello everyone. So this is part 2 of organic farming, and in this particular video we will be discussing NPOP, that is National Program for Organic Production, and we'll also look into certification process. At the end we will look at some of the programs that promote organic farming, government schemes that promote organic farming. All right, and we will conclude with the previous year's question that was asked from this particular topic. All right, so NPOP, National Program for Organic Production. Now, the most important thing you have to remember is this is basically a quality quality assurance initiative for organic products in India. Basically, those products which are to be exported. Okay, so they should have a quality assurance. Otherwise anybody will write organic product and try to export it. That will be counterproductive, because again those goods will be rejected by the importing countries. So there should be a minimum standard, minimum quality and minimum standard for products to be labeled as organic. All right, so during 2001, Ministry of Commerce and Industry, so this is the ministry under which NPOP programs fall. So Ministry of Commerce and Industry, if you remember the PYQ, there the option, one of the option was it comes under Ministry of Rural Development, or to confuse you they can also give it comes under Ministry of Agriculture and Cooperation. So it falls under Ministry of Commerce and Industry. This is the most important point. All right, and so National Program for Organic Production, it is first such quality assurance initiative for organic products in India. Okay, so during 2004, NPOP was brought under the ambit of Foreign Trade Development and Regulation Act, FTDR, where no organic products can be exported unless they are certified under NPOP program. So without certification you cannot export your product labeled as organic to other countries. तो ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है. ओके, क्वालिटी कंट्रोल एक तरह से. अदरवाइज एनीबडी will just write organic product and try to sell it. Afterwards they will find pesticide residues and the country's name will be muddled. So that is the reason why they are stressing for certification. So only certified products can be exported. So you have to get certification under NPOP program. Only after that you will be able to export your products. So that was the first point. Then Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA, it functions as the secretariat for the implementation of NPOP. So everything will be handled by APEDA. So working of NPOP will be handled by APEDA. So ये भी एक option था. If you remember, this was one of the option. So these are two important points from the PYQ. So APEDA acts as secretariat. It comes under the Ministry of Commerce and Industry. Okay, it is basically quality assurance initiative. Okay, then the program involves accreditation of certification bodies or standards for organic production and promotion of organic farming and marketing, etc. So basically to promote organic farming. So first of all, accreditation of certification bodies. So what APEDA does is APEDA will certify, APEDA will give accreditation to specific bodies. So say third parties. Okay, they will give accreditation to third party.
So they will recognize certain agencies and give accreditation to those agencies. So third party को they will give accreditation and these third parties, so ये जाके तुम्हारे फार्मर्स के फील्ड को सर्टिफाई करेंगे. They will give certification. Third party will give certification that uh, they can give organic food label to the particular field. So third party agencies, they will send their officers or their representatives to take the samples of the soil during the production and plant samples. They will test whether there are any pesticide residues. Only after they are satisfied, they will give you certification after a certain period. So there will be a 3 years period during which you have this is the waiting period. So during this period you will not be given certification. ये 3 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में तुमको सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं, बिकॉज तुमने आज डिसाइड किया है कि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे. सो फ्रॉम दिस सीजन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग फूड as organic. You will apply only organic fertilizers and you will not apply any synthetic fertilizers or synthetic pesticides. You decided this season, but previous years पे तो तुम अप्लाई कर रहे थे ना. इवन इन द लास्ट सीजन यू हैव अप्लाइड. सो तुम्हारे सॉइल में अभी भी पेस्टिसाइड्स हैं. सो देर इज ए वेटिंग पीरियड. ओके, 3 years का वेटिंग पीरियड होता है. So during this period you will not apply any synthetic pesticides or fertilizers. They will come and check the residues in the soil. They will also take the plant samples only after satisfaction कि सारा वो लोग रब जब रिव्यू करेंगे कि तुम्हारे सैंपल्स में, सॉइल सैंपल्स में या प्लांट सैंपल्स में कोई पेस्टिसाइड्स कुछ भी नहीं है, देन दे विल गिव यू सर्टिफिकेशन. तो ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? थर्ड पार्टी एजेंसी. ये थर्ड पार्टी एजेंसी को एक्रीडेशन कौन देता है? एपेडा. सो एपेडा विल रिकॉग्नाइज दीज थर्ड पार्टी एजेंसीज. दे विल गिव सर्टिफिकेशन टू द फार्मर्स फील्ड. ठीक है. सो एक्रीडेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज. स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. सो व्हाट आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स कि इससे ज्यादा रेसिड्यू नहीं होना चाहिए. सो देयर कैन बी रेसिड्यूज बट लिमिट्स, राइट. सो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. सो क्या क्या तुम अप्लाई कर सकते हो, क्या अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो देयर आर स्टैंडर्ड सेट ऑलरेडी. प्रमोशन, सो टू प्रमोट अमंग द कंज्यूमर्स एंड मार्केटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक फूड. सो ये सब चीजों में काम करता है. एनपीओपी, इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन. सो सर्टिफिकेशन इज गिवन बाय थर्ड पार्टी, right, which are accredited by, accreditation is given by NPOP. Oh sorry, APEDA. APEDA will give you under NPOP. APEDA has the power. They will give accreditation to third parties, party agencies. They will give certification to farmers field. Okay, so this is the process. So National Program for Organic Production grants organic farming certification through the process of third party certification. So third party agency will give you certification. इसको accreditation कौन देता है? एपेडा. So APEDA also acts as secretariat under NPOP. So products that meet NPOP standards can have India Organics label printed on them. So जो standards को meet करते हैं, जो field वो standards को meet करता है, राइट, उनको ही सर्टिफिकेशन देता है. ओनली आफ्टर सर्टिफिकेशन यू कैन प्रिंट दिस लेबल. सो इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो लोगो है तभी तुम अपने प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हो. विदाउट दिस लोगो योर प्रोडक्ट्स विल नॉट बी अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड. सो हाउएवर सिंस इंडिया ऑर्गेनिक इज अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, सो ये तो इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है, इसके साथ साथ जिस कंपनी ने या थर्ड पार्टी एजेंसी ने तुमको सर्टिफिकेशन दिया है ना, उसका भी लोगो लगाते हैं. सो द third party that have given the certification, उनका भी लोगो लगता है. Okay, so India Organic Certification is a system of process certification wherein an independent organization, third party, reviews the entire production. तो जो
जब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो फील्ड में, तुम कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स दैट यू यूज, क्या क्या तुम फॉलो कर रहे हो, वो सब देखते हैं। हाउ डू यू प्रोसेस योर फूड, हैंडलिंग, स्टोरेज में कोई पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो क्या, ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल में कहीं कंटेमिनेशन हो रहा है कि नहीं, सो एवरीथिंग विल बी रिव्यूड, एंड if they are satisfied, then only they will give you certification. So this is the India Organic logo. Now ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, दिस इज वेरी you can say cumbersome or grueling. Okay, so the process typically includes comprehensive review of the cultivation practices including land management. So farmer लैंड मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, यानी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए व्हाट ही इज अप्लाइंग, कौन से अमेंडमेंट्स अप्लाई कर रहा है, हाँ, व्हाट इनपुट्स ही इज यूजिंग, सिंथेटिक तो यूज नहीं कर रहा, कंपोस्ट यूज कर रहा है तो वो कहाँ से मटेरियल ला रहा है, राइट, यूज ऑफ मशीनरी, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है या फिर मैकेनिकली मैनेज कर रहा है, और ही स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, सो एवरीथिंग विल बी रिव्यूड. पोस्ट हार्वेस्ट operations in the crops, then rearing practices of animals, so animals को कैसे रेयर किया जा रहा है, वेदर ही इज अप्लाइंग एनी एंटीबायोटिक्स, डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कोई हार्मोन्स तो नहीं दे रहे एनिमल्स को, फीड एडिटिव्स व्हाट दे आर यूजिंग, right, everything, any drug which is used to cure any disease in the animals, everything will be reviewed, products processing and handling, okay, through document review and on site physical inspection. तो उनके जो थर्ड पार्टी एजेंसी का जो इंस्पेक्टर है या फिर जो उनका एजेंट है, ही विल गो एंड इंस्पेक्ट द प्रीमाइस, जहां पर एनिमल्स को, एनिमल शेल्टर जहां पर भी है, ही विल go and physically inspect everything, every aspect will be inspected. So तुम्हारा inputs क्या यूज कर रहे हो, प्रोसेस कैसे कर रहे हो, स्टोरेज कहां पर हो रहा है, everything. Okay, then if they are satisfied, they will give you certification after a certain period. Okay, now so what are the steps? So certification में first step क्या है? So the first step in certification is learn about the organic farming. So farmer जो भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो फर्स्ट ही हैज टू लर्न व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, थियरी एंड प्रैक्टिस, एवरीथिंग. सो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बारे में सब कुछ जानेगा, देन प्लान करेगा, ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स और व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री ही विल गो विथ, राइट. सो तुम्हारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कुछ कैटल के साथ वो कुछ क्रॉप्स ग्रो करेगा या फिर व्हाट एवर प्लान ही हैज. सो पहले लर्न करेगा about organic farming principles, everything, then he will plan accordingly. उसके पास जो रिसोर्स है उसके हिसाब से, how much land does he own, accordingly he will plan the enterprises, then he will apply, यानी अब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा. he will bring inputs and he will start applying organic manure and try to control the pest using biological methods or integrated pest management, whatever, right. so this is the first step. second step क्या है? सो इमीडिएटली उसको उसी सीजन में सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, सो देर इज अ ट्रांसिशन पीरियड. सो ये 3 साल का ट्रांसिशन पीरियड होता है, ड्यूरिंग विच ही विल फॉलो ऑल द ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, ही विल फॉलो दैट. बट सर्टिफिकेशन विल नॉट बी गिवन बिकॉज this year he has started, but previously he has been applying pesticides in his field, so residues might still be there, so immediately certification nahi dete hain, right. So there is a waiting period or transition period. So during this period he will continue producing organic food, but he cannot sell them as organic food unless certification is given. So ये 3 साल का जो transition period है, during this period the pesticide residues whatever are there previously from previous application, they will slowly break down and slowly the residues will disappear. So after 3 years, if the soil does not have any residues and plant samples does not have any residues, and the farmer is practicing all the practices and principles under organic farming, and if the third party agency is satisfied, then certification is given. So third step is inspection. So the agent from the third party agency or the inspector, he will come and review everything, he will inspect the practices, the inputs. तो पूरे जो फाइल्स है, रजिस्टर्स है, वो सब जो भी इनपुट खरीद रहे हो क्या है, कहाँ से
एवरीथिंग विल बी रिव्यूड। प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, फील्ड में जाके सैंपल्स भी लेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा एनिमल शेल्टर, एवरीथिंग। देन दे विल रिव्यू एवरीथिंग कि सब कुछ सही है। अगर वो जब सेटिस्फाई होंगे, देन certification is given after this transition period. So that is the process of certification. Okay, so under NPOP a product can be labeled as organic. एक प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल के लेबल तभी कर सकते हो इन केस ऑफ सिंगल इंग्रेडिएंट। अगर वो सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, लाइक ऑर्गेनिक राइस और ऑर्गेनिक व्हीट और एनी सिंगल प्रोडक्ट where the requirements have been met as per the specified standards, it can be labeled as organic. Okay, so सारे जो requirements है, if they are met, then only you can label it as organic. Now in case of multi ingredient product, जैसे कुछ गरम मसाला का मिक्स है जिसमें जीरा है, हाँ, बाकी जो तुम्हारे स्पाइसेस हैं, हल्दी है, सब कुछ मिक्स करके है, राइट? सपोज देयर इज ए गरम मसाला मिक्स, so which has multiple spices. Okay, multi ingredient product है ये. So where minimum 95% of the ingredients are certified organic, they are of certified origin. अगर ये ऐसी जगह से ओरिजिनेट करते हैं जिसको ऑलरेडी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है, यानी 95% ऑफ द प्रोडक्ट or the 95% of the ingredients are of certified origin, then it can be labeled as certified organic. तो organic और certified organic में difference है. So single ingredient product में organic बोल सकते हो. If it is multi ingredient product, then at least 95% of the ingredients should be from certified origin. Then only you can label it as certified organic. Okay. Then our NPOP program is also recognized by other international agencies. For example, European, it is recognized by European Commission and Switzerland for unprocessed plant products. So ये unprocessed plant products के लिए it is equivalent to European standards, as equivalent to their own country standards. So NPOP, standards for production and accreditation system, is recognized by European Commission for unprocessed plant products, यानी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सो अनप्रोसेस्ड प्लांट प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स. Similarly, USDA has recognized NPOP, NPOP conformity assessment procedures of accreditation as equivalent to that of National Organic Program of US. So European Commission and USDA both have recognized NPOP program as equivalent to their own standards. Okay. Then, so this सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा सा सारा प्रोसेस वो सब रिव्यू करते हैं, एंड थर्ड पार्टी आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ब्राइबिंग भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, राइट? नाउ टू मेक इट इजी फॉर द फार्मर्स कि ये डॉक्यूमेंटेशन ये सब ज्यादा ना हो, टू मेक इट इजी, और उसका फीस भी होता है थोड़ा, राइट? टू मेक इट इजी फॉर द फार्मर्स, PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड स्कीम है, तो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड. सो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड PGS टू इंसेंटिवाइज मोर फार्मर्स टू ग्रो ऑर्गेनिक फूड. देखो, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में ये सर्टिफिकेशन एक बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस की तरह काम करता है. सो इट डज नॉट, आई मीन, इट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई फार्मर्स दे डोंट गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बहुत ना ग्रूलिंग है, कम्बरसम है, बहुत डिमांडिंग है. ओके, फीस भी इसका लगता है. सो PGS स्कीम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, इट विल मेक सर्टिफिकेशन अ बिट इजी. सो PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, is an operational manual for domestic organic certification. okay, ये ऑपरेशन मैनुअल है विच इज गिवन बाय नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद. तो ये भी आ सकता है भैया, ये कहाँ पर है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेयर इट इज लोकेटेड, गाजियाबाद. सो एक ऑपरेशनल मैनुअल है फॉर डोमेस्टिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन. यहां पर होता क्या है, फार्मर्स इन द सेम सिचुएशंस, यानी
सभी स्मॉल फार्मर्स हैं, सिमिलर सिचुएशन में है फार्मर्स. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच पीपल इन द सिमिलर सिचुएशंस, यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, they will assess, they will inspect and they will verify the production practices of each other. Suppose there are a bunch of farmers in a region, एक village में एक bunch of farmers हैं, suppose 10-15 farmers, they are all of them are growing organic product. So यहाँ पर कोई third party agency नहीं है, each farmer will act as an inspector. So एक farmer दूसरे farmer को inspect करेगा, right? सो उस एरिया में जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे नो ईच अदर. तो वो एक दूसरे की गारंटी लेते हैं कि भाई ये जो भी कर रहा है ना, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, राइट. फार्मर्स, दे विल चेक बिकॉज दे नो ऑल द प्रैक्टिसेस डन बाय द अदर फार्मर्स. सो फार्मर्स एक दूसरे की गारंटी है यहाँ पर. ओके, सो in this scheme, people in the similar situation, that means all are small or marginal farmers, okay, they assess, they inspect and verify the production practices of each other. एक दूसरे की गारंटी ले रहे हैं and take decision on organic certification. अगर बाकी फार्मर्स को लगता है कि इसने कुछ मिलावट किया है या फिर ये ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको नहीं देंगे. अदरवाइज all of them know what the other farmer is doing because they are neighbors. so ये एक तरह से ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाता है, राइट, टू एनकरेज फार्मर्स टू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. जो नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस, वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा डिमांडिंग है, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन वो सब चीजें होता है, तो फार्मर्स इतना जानते नहीं है वो सब. तो टू प्रमोट द फार्मर्स टुवर्ड्स organic farming, to take organic farming, PGS scheme was introduced. So it operates outside the third party certification. Okay, ये outside the framework of third party certification काम करता है. Now, programs which are related to organic farming. So government के ऐसे कौन से programs है जो organic farming को promote कर रहे हैं, उससे related है, ये भी जानना जरूरी है, right? So one of the most important program is परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY. Now, it is a sub-component of soil health management scheme under National Mission of Sustainable Agriculture. तो ये एक सब स्कीम है, हाँ. सो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नीचे सब स्कीम है, दैट इज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, उसका सब कॉम्पोनेंट है. सो इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंसेस. सो मॉडर्न नॉलेज एंड ट्रेडिशनल विजडम दोनों को कंबाइन करके हम लोग, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप कर सकते हैं. नाउ इट एम्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी बिल्डअप, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी सॉइल को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. सो परंपरागत कृषि विकास योजना ये एक है. 10 मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो ये भी एक सब कंपोनेंट है of sustainable national mission for sustainable agriculture. So it is a central sector scheme which is a submission under national mission for sustainable agriculture. Now it was launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for implementing in, I mean, it is implemented in all the states including Sikkim, right? So 12th 5 year plan period में ये हुआ था, यानी 2012 से 2017 के बीच में. सो इट वाज ड्यूरिंग 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में ये स्टार्ट हुआ था. सो स्कीम एम्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन वैल्यू चेन मोड टू लिंक ग्रोअर्स एंड कंज्यूमर्स. सो बेसिकली बैक एंड एंड फ्रंट एंड को लिंक करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर. यू नीड टू क्रिएट डिमांड ऑल्सो, राइट. ऑर्गेनिक फूड का डिमांड अवेयरनेस तुम्हारा जो कंज्यूमर्स है उनमें इंक्रीज करोगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फार्मर्स विल मूव फॉर द प्रोडक्शन. So development of certified organic production. It also aims to support the development of entire value chain, starting from input, seeds, certification to the creation of facilities for collection of organic food, aggregation, processing, marketing, right, brand building. So front end and back end दोनों को connect करने के लिए बात कर रहा है. So this program is also a submission under
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए स्कीम है। ओके, so these are the government schemes. Now if you see the difference between conventional and organic farming, let us take a quick recap। एक तरह से recap है ये। So conventional farming में they apply chemical fertilizers। okay, यूरिया अप्लाई कर रहे हो या फिर तुम अमोनियम नाइट्रेट अप्लाई कर रहे हो, और you are applying ammonium sulfate, DAP। so these are your synthetic fertilizers and chemical pesticides are allowed under conventional farming। but organic farming में natural fertilizers such as manure ये सब अप्लाई करते हैं। okay, synthetic insecticides are used in conventional farming, whereas biological management या फिर physical management you will use some other technique। okay, except chemical except chemical pesticides or synthetic insecticides you will go for any other method, biological method, physical method। hormones को भी use कर सकते हैं, okay, in controlling the pest। now use of synthetic herbicides is allowed। यहां पर हम लोग either mechanical killing of weeds or biological or cultural methods of weed management ये सब use करते हैं, but we do not use herbicides। now recently what has happened is हमारा जो herbicide consumption है इंडिया में वो बढ़ गया है because labor shortage के लिए। earlier 20-25 years back अगर तुम जाओगे तो mostly manual labor हमारा weeding के लिए उसके लिए यूज करते थे because the labor was cheap, so farmers could afford it। आजकल क्या है, लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, so farmers they prefer to control the weed through herbicides than manual labor। manual labor will be very costly। तो इसलिए herbicide का जो हमारा अभी जो कंजम्पशन है that has increased over the last 2 decades। so animals को antibiotics, hormones ये सब allowed है देना, but here they are allowed to cure the disease, antibiotics are given, but during that period the product cannot be sold as organic or the animal cannot be sold as organic। so if you see the PYQ, हम लोग वापस आते हैं PYQ पे। okay, so with reference to organic farming in India, consider the following statements। the NPOP, National Program for Organic Production, it falls under the Ministry of Rural Development। गलत है, Ministry of Commerce and Industry, remember, right? second, so first option is wrong। so EPEDA, Agricultural and Processed Foods Export Development Authority, functions as secretariat for the implementation of NPOP, right? This is true। and Sikkim became first organic state in 2016। so 2 and 3 only, that is the answer। so that was regarding organic farming। okay, so notes is already there on the Telegram channel, you can go through it। so that will be all, thank you very much।